Good morning, children. So children, in previous video we have started our new chapter, that was chapter 7, adaptation in plants. Adaptation in plants. In that we have discussed about so many things. I have told you the meaning of habitat. I have told you the meaning of adaptation. Then we have discussed that types of plants. There are two types of plants, terrestrial plant and aquatic plant, and in that video I have explained you only about terrestrial plants. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? प्लांट्स विच ग्रोज ऑन द लैंड. ऐसे प्लांट जो स्पेशली लैंड पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर बेसिकली फाउंड इन different places. They can be found in desert, they can be found in plains which we have discussed, they can be found in coastal regions, they can be found in marshy area, they can be found in wet rainforest जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है. So all these things we have discussed in previous video. I hope you have read that chapter. And today in this video beta we will discuss about the aquatic plants. And before that you have to tell me the meaning of habitat and adaptation. What was the habitat? Habitat क्या था बेटा? The place where a plant grows naturally. एक ऐसा place जो plant जो grow करता है उसके एक natural place पे वो उसका habitat होता है. And what was the meaning of adaptation? Adaptation क्या था? Adaptation, the change which help a plant to survive in its habitat. एक ऐसा change जो कि specially environment में होता है, and all the plant, and if we will talk about the animals, they also occupy it. So the change which help plant to survive in its habitat is called as adaptation. Okay. So today we will study about the aquatic plants. Firstly, you should know the meaning of aquatic plant. What is the meaning of aquatic plants? Aqua, आप इसके नेम में भी देख सकते हो AQUA. Aqua का मतलब होता है बेटा water. So aquatic plants means water plants, and plants that specially grow on and under water. Okay, जो on water और under water grow करने वाले जो plants होते हैं, they are called as aquatic plants. उनको हम बोलते हैं aquatic plants. And aquatic plants are specially of three kind of. वो three kind of होते हैं. First one is floating plants. जो first type है आपका वो है floating plant. उसके name से ही define हो रहा है float करने वाले plants. Okay, which we will discuss. But firstly you see the name of these three kind of aquatic plants. What is first? Floating plants. The second one is फिक्स्ड प्लांट्स. फिक्स्ड, अब देखो नेम से ही डिफाइन हो रहा है. फिक्स्ड मीन्स दे आर फिक्स्ड समवेयर, कहीं ना कहीं वो फिक्स होते होंगे. सो वी विल सी वेयर दे आर फिक्स्ड. एंड द थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो अंडर द वाटर ग्रो करते हैं. प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर, दे आर कॉल्ड एज अंडर वाटर aquatic plants. So children, what do you mean by aquatic plants? Plants that grow on and in the water, they are called as aquatic plants. Aquatic plants are specially of three kind of. The first one is floating plant, the second one is fixed plant, and the third one is underwater plants. Now what kind of specialties they have? इनके जो features हैं वो क्या होते हैं? How they are growing in the water, on the water, we will study about that. And which plants are known as floating, fixed and underwater, which we will also study. वो भी हम स्टडी करेंगे कि इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं और कौन कौन से इनके फीचर्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स स्पेशली फ्लोट ऑन द वाटर. ये जो प्लांट होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट. इनका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है, एंड दे आर फाउंड एट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज फ्लोइंग. ऐसे फ्लोट करते हुए वो नजर आता है. Okay, that's why we can say float freely. ये easily float करते हुए नजर आते हैं just because of their weight. Okay, and which plants are known as floating plants? In example, what will you write? The duckweed and water hyacinth. You have to learn the spelling also. Duckweed का spelling क्या है? DUCKWEED. Duckweed and water hyacinth WATER, and hyacinth HYACINTH. So duckweed and water hyacinth, example of floating plant.
and they are found at the on the surface of the water in floating condition. So they are called as floating plants. Now we will study about the fixed plant. Fixed plant means these plants are fixed under the water in the soil, and especially they are growing up on the water. Water के ऊपर आपको वो दिखते हैं, but their roots are very long, they are going deep, and they are fixed in the soil which is present under the water. So are fixed in the soil under water. Their roots are fixed under the soil, okay, just because of their long root. उनके जो रूट होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और वो नीचे फिक्स होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड प्लांट्स. द सेकेंड, दे हैव थिन लॉन्ग होलो स्टेम. उनका जो स्टेम होता है बहुत पतला होता है, लॉन्ग होता है, इसीलिए वो नीचे तक फिक्स होता है. एंड देयर रूट्स आर फिक्स्ड अंडर द सॉइल. और बाकी जो वाटर को कवर करता है दैट इज लॉन्ग होलो स्टेम. अंडर द वाटर जो कवर करेगा दैट इज लॉन्ग होलो स्टेम. अंडर द सॉइल रूट्स आर प्रेजेंट एंड द शेप ऑफ इट इज थिन. स्पेशली स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. द पार्ट ऑफ प्लांट, जो बेसिकली जितना पार्ट ऑफ प्लांट है वो ऊपर वाटर के ऊपर जो प्रेजेंट होगा, इन दैट स्टोमेटास आर प्रेजेंट. So where are stomatas present? Stomatas are present on the upper surface of the water. Water के upper surface में leaf में जो stomatas present होंगे, through the stomatas they breathe properly. But rest of the remaining part, their hollow stem, thin long hollow stem, and the root would be underside of the water. Now which examples will come in fixed plant? Fixed plant के जो example है वो क्या है आपका? Lotus and water lily. You can see the lotus flower up on the water. आपको पानी से ऊपर दिखाई देता है. And their leaves are floating on the surface of the water. Yes. So their leaves are floating on the surface of the water. It means their stomatas are also present and they breathe properly. Okay. And lotus, water lily are examples of fixed plant. ये जो examples हैं ये किसके example है? Fixed plant के. Children ये आपको learn करना है because in exam the example can be given and the type of plant we will ask you which type of plant is it. So you should identify. आपको पता करना पड़ेगा वो कौन सा plant है. Okay. Now we will study about the next underwater plant. Underwater plant अब देखो name से ही define हो रहा है. Underwater means the plants which are available under the water. ऐसे plants जो under water present होते हैं they are called as underwater एक्वेटिक प्लांट्स. पानी के नीचे जो होते हैं. किस टाइप के फीचर्स होते हैं इनके? लेट्स रीड. दे ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर. स्पेशली कहाँ ग्रो करेंगे ये? अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर. सेकेंडली दे हैव थिन नैरो एंड लॉन्ग लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटास. ये इनका स्पेशल फीचर होता है बेटा. यू नो दैट ऑल द लीव्स हैव स्टोमेटास. But underwater plants does not have stomatas on them. उनके जो leaves होते हैं वो thin leaves होते हैं, पतले leaves होते हैं, and they do not have stomatas. So now what do? You will see. They breathe through body surface. How do they breathe now? They breathe through their body surface. वो अपने body के surface जो उनके leaves होते हैं वो ऐसे ऐसे crawl करते हुए नजर आते हैं, वो उसी से ही breathing process करते हैं. Okay. And special stomatas they do not have on the surface of the leaf. Clear? Then they absorb CO2 and release oxygen for aquatic plant. Means you know very well that plants absorb CO2 which animals release, and plants release oxygen for the animals to breathe. Okay. So underwater what happens? अंडर प्लांट्स स्पेशली क्या करते हैं बेटा? जो इक्वेटिक लाइफ होती है एनिमल्स की. अंडर वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक फिश, स्टार फिश. देर आर सो मेनी एनिमल्स विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड बाय अंडर वाटर प्लांट्स एंड दे रिलीज ऑक्सीजन फॉर इक्वेटिक एनिमल्स. वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इक्वेटिक एनिमल्स के लिए. Okay, in this way they are cleaning the water bodies also.
वाटर के अंदर जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको क्लीन करके वो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर? सो दे आर हैविंग मेन रोल इन क्लीनिंग वाटर अंडर वाटर बॉडीज। किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं उनका जो मेन रोल होता है टू क्लीन द water. And now which examples will come in underwater plants? In underwater plants tape grass and pondweed will come. Tape grass किसका एग्जाम्पल है? अंडरवाटर प्लांट का। एंड सेकेंड है आपका pondweed. pondweed यहाँ डकवीड है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोटिंग प्लांट में आपका डकवीड है और अंडरवाटर प्लांट में आपका pondweed है। ओके, सो दीज टू प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरवाटर प्लांट्स। And now we will discuss about plants of the grass family. बेटा grass family के कुछ plants ऐसे होते हैं जो हम उनको use करते हैं। Which plants are known as grass family? In that cereal plants will come. Cereal plants and the second one is bamboo plant. Cereals क्या होते हैं बेटा? ये वो सीरियल नहीं है, the spelling is different, okay? cereal, that is cereal, and all the grains comes as cereal, okay? Which grains will come? In that wheat is there, barley is there, maize is there. Wheat क्या होता है बेटा? आपका गेहूं, okay? We use wheat a lot because we make chapati, then we use it to eat. Then barley होता है आपका जौ, that is also comes as cereal plant. And maize होती है मक्का, okay? All these things, all these grains are known as cereals, जिनको हम specially food के लिए use करते हैं। We are using it as a food. And with like us, animals are also using it for their food. वो भी अपने हमारी तरह इसको food के जैसे use करते हैं because we use the grain part of it. हम इनको grain के रूप में use करते हैं and the fodder of it. फॉडर मतलब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट एनिमल्स यूज करते हैं फॉर देयर फॉडर विच इज नोन एज फॉडर, जिसको आप बोलते हैं चारा। और वो चारा कौन यूज करते हैं? एनिमल्स, टू गेट देयर फूड, अपने फूड के लिए। सो दिस इज एज कम्स एज अ ग्रास फैमिली विच वी यूज टू ईट इट एज फूड। वी यूज इट, एनिमल्स ऑल्सो यूज इट बिकॉज दे गेट द फॉडर फ्रॉम इट। ओके, नेक्स्ट वन इज बैम्बू। Bamboo होता है बेटा बांस। There are many things which are made up from bamboo, like mat. We will talk about chair, wooden furniture. Okay, all these things are made from bamboo. So these are the plants which are also important for us. हमारे लिए important होते हैं because they have many ways. बहुत सारे इनके ways होते हैं which we have discussed. Now we will study about some more interesting plant. कुछ और interesting plants होते हैं नेचर में, हम उनकी स्टडी करेंगे। So now we will study about some interesting plants. Some interesting plants we also have in our nature beta. They are called as insectivorous plants and you can also tell them as a carnivorous plants. कार्निवोरस एनिमल्स आपने पढ़ा होगा। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स, दोज एनिमल्स स्पेशली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज कार्निवोरस एनिमल्स। यहाँ ये एनिमल्स नहीं है बेटा, दे आर प्लांट्स। कार्निवोरस प्लांट्स मीन्स हमारे नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं दोज डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड नहीं बनाते। अभी तक आपने पढ़ा है दैट प्लांट्स आर हैविंग chlorophyll absorbing sunlight, they are making their own food with the help of air, water, sunlight. But these are the plants which are carnivorous plants. And carnivorous plants, they are also called as insectivorous plants. Insectivorous plants इनको क्यों बोला है? Because they eat insects. Okay, so which plants eat insects? There are 3 examples I have written on the board. What these are? Venus flytrap, pitcher plant and sundew plant. These plants specially eat insects, that's why they are called as insectivorous plants and we can also say carnivorous plants to them. Venus flytrap, if you will see the structure which is given in your book, इसका जो structure होता है वो कुछ इस तरीके से होता है and they have some sensitive hairs on their body.
So what happens when any insect come and by chance it sits on that leaf, अगर वो उसके ऊपर बैठता है, so it would not be able to fly. Actually it has a sensitive hair, कुछ ऐसे वैक्सी कोटिंग होती है जिसमें उसके जो लेग्स हैं वो फंस जाते हैं, and they would not able to fly again, दोबारा वो नहीं उड़ पाते हैं. And after some time the Venus flytrap closes its lid and the insect would go down. They eat that, they absorb it, they digest it, उसको digest कर जाते हैं, and after digesting the insect they again open their lids. Same thing happens in Peacher plant, but the structure of Peacher plant is different from the Venus flytrap, but the process is same. In that also insects come, it sits and it closes its lid, then eats the insect, digests it, then after it opens its lid. Okay, so they are waiting for the insects to eat. ये हमेशा insects का ही वेट करते हैं to get their food. Sundew plant is also a insectivorous plant. ये भी एक insectivorous plants है and it eats the insects especially. Apart from insectivorous plants, non-green plants are also there. अब non-green plants क्या होते हैं? Non-green, देखो नेम से ही डिफाइन हो रहा है, non-green plants which are not green. अब not green है, so it's understood that they do not have chlorophyll. Those are non-green, it means they do not have chlorophyll in them. If they do not have chlorophyll in them, so how they are making their food? So they are not making their own food. So how they are surviving? Question arises कि अगर वो अपना food खुद नहीं बना रहे, so how they are surviving? So they are surviving because they grow on the dead plants and animals, especially जहाँ कूड़ा कचरा जो humus present होता है, remaining part of plant and animals, there they grow and they take their food from the dead material. जो dead material होता है उससे ही अपना food absorb करते हैं, लेते हैं. That's why they are called as non-green plants, and they are also called as saprophytic plants. Saprophytic मतलब they do not develop flower and fruit, they develop some spores. वो spores develop करते हैं और spores के बेस पे इसको saprophytic plants बोला है. Okay, because जो उनके spores होते हैं they are already present in the remaining part of plant. जो plants के part होते हैं, जो humus सड़ा गला जो material होता है soil में mix, उसमें ये spores होते हैं. So they grow on their own when rainy season is there. जब rainy season होता है तो ये अपने आप develop करते हैं. And what examples of non-green plants here? Mushroom, you can write fungi also, and mold, then after Indian pine. These three are example of non-green plants which are also called as saprophytic plants. So children, we have completed this chapter. I hope you have understood it well. So you have to read this chapter again after watching this video. Thank you.